ईडी को सुप्रीम कोर्ट को कड़ा भत्सना सबु सीमा टपिलाणी ईडी मनइच्छा काम करुछि प्रवर्तन निर्देशालय एभली कड़ा भाषा में प्रवर्तन निर्देशालय को सुप्रीम कोर्ट भत्सना करिसेंति। तमिलनाडुर सरकारी मद बिक्री संस्था TASMAC को नहीं यह कहते सुप्रीम कोर्ट यह सहित यह तदंत उपरे स्थगितादेश जारी करिसेंति। TASMAC रो विभिन्न स्थान में ईडी रेड करथिला यह विरोध में सुप्रीम कोर्ट को जाइथिले तमिलनाडु सरकार तार शुणाणी करी सुप्रीम कोर्ट ईडी को भत्सना करिसेंति एवं नोटिस मध्य जारी करिसेंति। सुप्रीम कोर्ट कहिसेंति आईन श्रृंखला हेउछि राज्यर विषय एठारे ईडी रो कार्य हेउछि असंवैधानिक ईडी एक राज्य निगम को टार्गेट करी समस्त सीमा अतिक्रम करुछि एवं संघीय ढांचार उल्लंघन करुछि। तमिलनाडु रे हजारे कोटी टंकार मद दुर्नीति होइछि। मद जोगाण ऑर्डर सुरक्षित करबा पई डिस्टिलरी गुडी को बेनामी टंका दिया जाइथिबा नै मध्य कुहा जाइथिला। तमिलनाडु सरकार कहिथिले विजिलेंस यार तदंत करुछि। 2014 रु 2021 मध्य अनेक आउटलेट ऑपरेटर मानक विरोध में 40 रु अधिक एतला दि जाइछि किंतु ईडी निज क्षमतार अपव्यवहार करी ए मामला रे प्रवेश करिछि। राजनीतिक प्रतिशोध उद्देश्य रे ईडी एभली रेड करिथिबा तमिलनाडु सरकार पक्षरु कुहा जाइथिला। सुप्रीम कोर्ट रो आईनजीवी विश्वजित दास हम सहित फोन लाइन रे अछंती। शुक्त दास स्वागत करछि आपन नंदीघोष टीवी को। सुप्रीम कोर्ट को जो ऑब्जर्वेशन ईडी ऊपर रही एवं ईडी को मध्य सुप्रीम कोर्ट नोटिस करिसेंति खास करी तमिलनाडु रे रेड प्रसंग रे कौन कौन सुप्रीम कोर्ट उल्लेख करिसेंति एवं काहे कि ईडी को भत्सना करिसेंति सर्वोच्च अदालत। Well, this is one of kind of a cases upon the if you see the pattern of the similar kind on the Honorable Supreme Court when it comes to the PMLA matter. This is called the Preventing Act. Investigating the state TASMAC in the case of a Tamil Nadu state marketing company. Now, Supreme Court जो आजिकार जो स्टे कर इन्वेस्टिगेशन टाकू जोटा कि आपनकर इंटरेस्टिंग इफ यू मस्ट रिमेंबर दैट तमिलनाडु गवर्नमेंट फर्स्ट तमिलनाडु हाई कोर्ट रे चैलेंज करथले से इन्वेस्टिगेशन को एंड द हाई कोर्ट रिजेक्टेड देयर रिक्वेस्ट फॉर स्टे एंड नॉन प्रोसिक्यूशन बट नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज scathingly attacked in rather question the power, the indiscriminate exercise of power where they are trying to even usurp the federal status and federal principles because what a state agency, what a corporation acting as an independent entity, now there could be a corruption. Now in that corruption, relevant officers, relevant parties who are accused of committing an offense, इन्वेस्टिगेशन पुलिस से चलिबा सत्वे सेमाने कोन करछन ना ईडी ताकू से इन्वेस्टिगेशन नउची बिकॉज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टैट्यूटरीली ईडी हैज पावर बट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द ईडी टू से दैट टेल अस इन एफिडेविट दैट व्हाट इज द प्रेडिकेट ऑफेंस बिकॉज़ आपण मन रखतांतु मनी लॉन्ड्रिंग इज अ वेरी यूनिक ऑफेंस it is a criminal offense so far as the laundering of proceeds of crime are concerned. What is proceeds of crime? That should be a crime and from there is a proceeds. So if the proceeds is getting laundered and tainted as a non-laundered money or a non-crime proceeds, in that case, this is a proceeds of crime. Honestly, in a situation like this, according to me, there is no legal impediment when it comes to the ED. But the point is the kind of a power, legislative power that the ED possess is unprecedented. And therefore, as a मनीषा जो जगह मनीषा रहिबो ताकू जदि आपण पावर देबे से ताकू दुरुपयोग तो हबो तेणु तार कौन तो बारोमीटर नहीं स्टैट्यूटरी बारोमीटर नहीं कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम टाकू आपण लॉन्ड्रिंग केमती कहबे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इज ए सब्जेक्टिव सैटिस्फैक्शन ऑफ द ईडी नाउ इन दिस केसेस the even though predicate offense in criminal investigation is being done by the respective local agency or the CBI, the ED still has the power to launder the proceeds of the crime. So anyway, now the Honorable Supreme Court has given a very scathing observation saying that you are transgressing your power, right. You are abusing your power, and you are impinging into the federal scheme. Federal scheme kono na state or subject or center subject ता भितर आपण इंटरव्यू करछि एवं दुई तीन बडा कथा कले मु किंतु एठी आ गोटिए कथा मध्ये कैटेगोरिकली जानिया पई चाहूछि इज दिस द डायरेक्शन एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स एठी केवल तमिलनाडु प्रसंग रे कुआ जायछि ना ईडी रो एक्शन इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स आल्सो No, I don't think this is with respect to the state. I know all the state government. Here it is a case-centric observation. But by and large, the state, the Supreme Court has actually questioned the manner because, of course, Supreme Court to khali Tamil Nadu ei gotiye case re observation ta dei nahati. Supreme Court ka pakhare multiple cases, similar kind of cases with respect to other state governments. There is a huge amount of experience this government has
when it comes to the abuse of power by the alleged in number of cases against the various other state agencies and state government. Now, therefore, to say that it may not be, it is a case-centric observation may not be entirely correct. But legalistically speaking, this is definitely a case of observation on a particular matter before the court, which is in this case, it's a TASMAC. That is the Tamil Nadu State Marketing Company. So my point is, yes, I am answering your question saying that whether it is a state-centric or it is a whole state-centric. Yes, indeed, legalistically it is in the Tamil Nadu case, but actually this is a message to the ED, loud and clear, that this kind of abuse of the power by you, is not going to be tolerated by the Honorable Supreme Court. And now the Supreme Court has a huge amount of experience, particularly in a similar kind of a matter, where there is a predicate offense is being investigated by respective agencies and the ED is entering into it. And as I told you, please understand, to continue, running with the hare and hunting with the hound. As long as the Honorable Supreme Court doesn't take a judicial note that this is not a kind of a law which actually serves the civility, the Honorable Supreme Court will be giving these kind of observation in almost all ठीक cases. अच्छे निश्चित भाव And में mark my सुप्रीम word, कोर्ट वर्तमान समय जो कथा आपण उल्लेख कर तीन चार बड़ कथा कहते केवल ईडी को नोटिस करना बर यही मामलें स्पष्ट भाव में कहते जहाँ जहाँ लक्ष्मण रेखा रही आपण मैंने अतिक्रम करने आवश्यक नुहे। अनेक अनेक धन्यवाद। विश्वजित दास थे आम सहित सुप्रीम कोर्टर आईनजीवी अधिक आलोचना प्रसंग में करते।